friends. Today I have the honor of introducing to you Dr. Kanan Panchal. She is a rank 32 in the June 2020 AIMS exam, which is a great performance in a topmost institute in the country. She has been a DAM student for last 4 years. She started with a 3-year course where she did foundation course for 2 years, then regular course, and then followed it up with a test and discussion, AIMS specific test and discussion that we launched recently. And this is the a very satisfying for us as a teacher, as an institute, where a student has been able to continuously perform well in different exams. So Kanan, it's my matter of pride to be able to talk to you today. Tell me, about your feelings right now and the feelings which you got when you saw your result. सर आई वॉज फीलिंग वेरी गुड. अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इट वॉज एम्स एग्जाम वॉज अ ड्रीम फ्रॉम बिगिनिंग और गिविंग एम्स एग्जाम वॉज माई ओनली टारगेट कि एम्स की एग्जाम्स देनी है एंड गेटिंग सच अ गुड रैंक इज ऑल्सो फीलिंग आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी नाइस. And I think that kind of tells you that you worked hard, और वो hard work किया आपका. I remember you had a decent rank in NEET PG as well, and you could have gotten your branch of your choice through NEET, and despite that you were studying for the mid-year exam. So tell us more about it. Like कई लोगों ने तो छोड़ दिया होगा ना कि यार नहीं करना मुझे, I'm happy with what I'm getting, and like what made you study till this level? The day I started internship, I was sure कि मेरे को एम्स की एग्जाम देनी है. Mid-year AIMS, I was targeting mid-year AIMS from the beginning. I actually wanted to give AIMS exams after the 12th, लेकिन I had some reasons I could not give there, and then I decided कि नहीं, PG के बाद एक बार AIMS की एग्जाम तो देनी है, irrespective of my NEET results. I had in mind कि मेरे को, I was targeting mid-year AIMS, and I had in mind कि बस AIMS की एग्जाम देनी. एंड दैट ओनली केप्ट मी गोइंग कि नहीं देते हैं एम्स के एग्जाम देते हैं, अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो माय लाइफ वुड हैव बीन अ वेरी बेटर लाइफ रादर देन. एंड इट इज लाइक मतलब एक वो बचपन का सपना था जो उस समय रह गया था. Yes, at the time of school you somehow did not give the AIMS exam, and this time you wanted to make it, and today you are giving an interview and completing that circle. वो जो बाकी था वो खत्म किया आपने, and you're giving an interview now after getting a top 50 rank in AIMS, the most prestigious exam for doctors in the country. So Karan, you tell me about that. You joined DAMS in third year as a in the classroom course student in Ahmedabad. How was your experience in the classroom? sir, it was very nice. The teachers live lectures होते थे, interacting with teachers, it kind of kept me motivated कि नहीं करते हैं and listening to their stories. Teachers every teacher who came here, he would motivate us कि नहीं तुम लोग go exam दो, and that kept us going कि नहीं करते हैं, हो जाएगा करते हैं. So it was a very nice thing, and having to interact with teachers was a very good feeling. And जब हम classroom में होते थे, when you were in the classroom, then there would have been the occasions where the students around you or your friends or the people around you may have been answering some questions. Sometimes you might be answering. Yes. Did that create that enthusiasm and competition to? Yes, definitely. कि नहीं जिसको मेरे ज्यादा आता है नहीं करना है, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ते थे हम. And I've seen a lot of things, a lot of students, they tend to subscribe to and they go towards a recorded lecture kind of stuff. And what happens is initially they get very happy as if they have bought a toy. But then the discipline is not there to finish and they are unable to finish. While in a classroom, you have to sit there and the teachers will make you sit. And that energy and people around you are also giving that energy. I think that collective energy is very important for competitive exams. Yes, sir. Definitely. And क्लास डैम्स की नोट्स दे आर वेरी प्रिसाइज कि जितना चाहिए उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं निकले देना है. तो बाकी सब में ज्यादा होता है. आई डोंट फील लाइक द डैम्स नोट्स आर गोल्ड स्टैंडर्ड, उसमें से ही आता है सब कुछ, एंड दे आर वेरी प्रिसाइज. इवन एम्स का TND के नोट्स भी, देयर वर मेनी क्वेश्चंस इन एम्स जून एग्जाम के they were from the sky, the TND notes only itself. एक बार TND notes पढ़ लेते हैं आप तो हो जाता है. It was very precise. The notes are very precise.
So जब when you were a part of the regular course student and foundation, you made notes, you understood concepts, and when you came to the TND, this time your goal was to learn how to apply and learn only the most precise things which will be important for the AIMS exam, because right now your goal was very clear. You wanted only AIMS this time. Yeah. So so please comment on the quality of questions and discussions in the AIMS TND. They were very, very good. The questions were very nice. And after the NEET exam, after this time's NEET exam, we were very unsure. And the AIMS TND was like the NEET and it was like the new pattern of questions only. Though in this time AIMS के इस बार वो pattern हो नहीं सकी, लेकिन the pattern was बहुत, the questions are very nice. And they were very nice, and the discussion also, it was very precise. There were some topics के जो नीट में हम लोग नहीं फोकस करते, लेकिन they are very much in एम्स में होते हैं, तो they were also very, मतलब सब टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. I didn't feel like कि नहीं कुछ टॉपिक रह गया हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन everything was covered in AIMS TND. Karan, you had a 4-year journey with DAMS. You have kind of seen everything, all kind of teachers, foundation, regular, TND, satellite class, app-based class also you must have seen recently when the lockdown happened. I think you are a unique student where you have actually attended all kind of classes with us. So Yes, any teachers now that come to your mind when we look at the journey? Sorry? Any teachers that you come to your mind today when you look back at the Actually, journey? the first thing that came to mind was you. I came to meet you during the NEET regular practice. I don't know whether you remember it or not, but you said कि नहीं तू कर सकती है. That was the only thing that kept me going. And NEET में I made the NEET during the NEET exams. I got scared and I could attempt only 270 questions. So I was, मतलब इस बार AIMS में I went aggressive. 193 तो हो सकता था, मतलब अरे नीट की एग्जाम के बाद वही द ओनली फीलिंग वाज कि नहीं मैंने थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट किया होता तो थोड़ा अच्छे मार्क्स आ जाते. आई कुड हैव गेट सम एटलीस्ट इवन 1-2 मार्क्स. इफ आई कुड हैव गेटन मोर देन आई वुड हैव बीन एट अनदर लेवल, बट इट्स फाइन. जो एट दैट टाइम ड्यूरिंग गिविंग द नीट एग्जाम आई फेल्ट कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन ड्यूरिंग द आफ्टर नीट आई हैड इन माइंड कि नहीं इस बार तो अग्रेसिव रहना है एम्स के एग्जाम में. And I didn't know so. And I think I told this in a video before the NEET also and before the AIMS exam also कि जो 2 choice rule out हो जाए उसके बाद हमें करना है. And because we have to hit it hard, hit the exam hard. And इस बार आपने किया, I think you kind of made एक वो जो बाकी था वो खत्म किया कि मतलब मैं AIMS तक जा सकती हूँ. And that's a great achievement. So, also tell me about the resources on the eMedicos app. Like we had the question bank, test series, grand test, the previous paper solutions, AIMS capsule. Like what was your experience with the app resources? Okay. The eMedicos app is the content is very nice in the eMedicos app. The AIMS capsule videos. Then I watched emergency medicine videos. I watched the Harrison-based teaching videos as well, and mop-up sessions also I used to watch. And then the EQ series which you conducted every Wednesday, that was also very nice. Even a video for 5 to 7 minutes, and कभी कंटाला आता है तो चलो वो वीडियो देख लेते हैं, तो वो भी अच्छा रहता था. तो कुछ ना कुछ नया मिलता था हमको वहाँ पे eMedico EQ series में. And it was very nice. Then the grand test. Grand test I used to give it regularly. Grand test I used to give it regularly. It was and every time after giving a grand test I would say मतलब थोड़ा स्कोर बढ़ता था. तो नहीं I was कि नहीं हम सही जा रहे हो जाएगा. And I think grand test is the most important tool to improve in the final 6 months before any exam, I think. And I see a lot of students ignoring grand tests. So Karan, I want to know from you, beta, can you advise future aspirants कि भी grand test को कैसे दें और कैसे अपना performance को track करें?
Okay, grant test. I start giving grant test as early as possible. Every month starting में every month में एक grant test तो चलेगा. लेकिन आपको पता चलेगा even if I used to feel sometimes before giving a grant test कि नहीं मेरे से नहीं होगा इस बार. लेकिन after giving a grant test I would score a little bit of better than the previous one and then कि नहीं हम लोग सही जा रहे हैं, अच्छा हो जा रहे हो सही जा रहे. डोंट फील स्कैर्ड कि नहीं एग्जाम नहीं देनी है ग्रांट टेस्ट तो घर पे बैठ के देनी है कोई वहां पे कई बार जाना तो है तो फिर डरना मतलब कोई डरने की बात नहीं है उसमें ग्रांट टेस्ट देने से एंड यू कैन फील मतलब यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ कि हम लोग कहाँ वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग एंड जस्ट मेक श्योर कि आपका नंबर इफ यू आर स्टडिंग रेगुलरली अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप वेदर यू फील गुड और नॉट लेकिन आफ्टर गिविंग अ ग्रांट आपका स्कोर बढ़ेगा ही एवरी टाइम एवरी ग्रांट टेस्ट एंड आई वुड से स्टार्ट रिवीजन एज अर्ली मतलब अगस्त में स्टार्ट रिवाइजिंग फॉर द जितना भी अभी तक हो गया है उतना रिवाइज करना एटलीस्ट गिव 1 to 2 hours a day for revision at least I used to give at least 1 to 2 hours a day for revision कि आकर का कोई भी आगे हुआ हो सब्जेक्ट वो चालू कर देते थे हम आई वुड स्टार्ट रिवाइजिंग के एटलीस्ट 2 topics 3 topics लेकिन आई वुड रिवाइज अ प्रीवियस सब्जेक्ट एवरी डे. And Beta, did you also use the new pattern questions in DQB, जो AIMS pattern questions हैं, video based questions हैं, and how was your experience? They are also very nice. The video based questions were very nice. Then the multiple completion types were also very nice. I could not complete everything, लेकिन जितना भी मैंने किया था वो बहुत अच्छा था. And it was the explanations are also given in the question explanation. After reading the explanation you can see where you are going wrong, so you can see कि नहीं एक दूसरी बार ये गलती नहीं होगी हमसे. And were you happy with the image based course that we run like DVT and the AIMS capsule जहाँ हमने सारा revise किया था? Did they help you to predict the paper and the pattern that would happen? Yes, definitely. The DVT was very nice. DVT, many questions were from DVT as well. AIMS capsule में से भी कितने I could find कि नहीं AIMS capsule में से questions थे. AIMS capsule is very मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले तो AIMS capsule कर लोगे तो एक बार you will feel confident कि नहीं एटलीस्ट सब सब्जेक्ट कवर हो गए हैं मेरे नाइट के हो जाएगा. And the platform में flowcharts दिए हैं सर ने, they are also very nice. And getting to a question on the basis of flowchart is very nice rather than thinking कि नहीं ये नहीं होगा. Even if you go through flowcharts, you can get to the answer very quickly. And Beta, I also want to know from you any CBTs that you have given or the AIMS mock अभी जो हुआ वो दिया या पहले CBT दी, any experience with them? CBT the CBT computer based CBT नीट के टाइम मैंने सब CBTs दी थी तो that would help us के फाइनल नीट एग्जाम में कैसा एनवायरनमेंट होगा तो you get familiar to the environment right from the beginning rather than going on the day of the exam can we turn seeing so many people on the on the day of NEET exam might get scared rather than get used to it कि नहीं इतने सारे लोग होंगे तो देख सकते मतलब you can get the feel of an exam. The CBTs are also very nice and competing with so many people all over India in CBT is also gives you an idea कि नहीं where are you standing right now and it helps a lot. Beta, you have already told us how many questions did you attempt in the AIMS exam, but I want your analysis on this AIMS exam. Like ये पेपर के अंदर जैसे the video based questions were not there, image based थे लेकिन assertion reasoning last में change हो गया, last moment change था वो. But overall, what was your impression of the paper? और ये how do you compare this paper with the November AIMS जो पहले हुआ और क्या लगता है आपको इसके बारे में? The paper was very easy. बहुत one liner बहुत थे लेकिन there were very conceptual questions as well कि नहीं तुमको if you know then only you can if you know the concept then only you can solve the answer rather than giving the rather than mugging up. There were November exam November AIMS it was comparable to November AIMS I would say लेकिन almost similar to November AIMS. There were many basic questions
माइक्रोबायो के ज्यादा थे, देन फार्मेक के भी ज्यादा क्वेश्चंस थे. आई कुड सर्जरी मेडिसिन पे थोड़ा फोकस कम लगा मुझे इस बार. ओबीजीवाई पे फोकस था और फिर हाँ, इट वाज अ डूएबल पेपर दिस टाइम. And बेटा tell us something about हमने पढ़ाई की बात कर ली कि कैसे पढ़े, क्या नोट्स बनाया, कैसे किया, लेकिन इसके अलावा to be a topper and to be in your position today you need a mindset. भाई हर कोई तो नहीं कर पाता. So tell us कि आप अपने आप को क्या बताते हो, मतलब what do you tell yourself कि मतलब this is मुझे ये करना है या ये मुझे ये करके दिखाना है, like how do you maintain your mindset? I had one thing, मतलब I have this, I am sort of a stubborn person कि नहीं, मेरे को ये करना है तो मैं करूंगी ही. And I had in mind कि मेरे को एम्स की एग्जाम देनी है and मैं दूंगी. And अगर नहीं हो गया तो आपसे वीडियो होगा, नहीं तो फिर I will get a new experience कि कुछ सीखने को मिलेगा. And I would focus on my mistakes कि नहीं, ये mistakes हो रही है तो ये दूसरी बार दोबारा रिपीट नहीं करनी है. And just find out your mistakes and yes, definitely. I think जो मुझे लगता है जो विनर्स हैं बच्चे, वो हमेशा हर चीज को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं. I would like very beautiful thought that you put up कि अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो कुछ सीखेंगे. And that's the beauty of it. If you look at things as a learning experience, you tend to evolve and you tend to do better. और दूसरी जो चीज मुझे अच्छी लगी वो थी कि जिद. when you say stubborn और जिद है, वो जिद भी एक चाहिए, नहीं तो बड़ा काम नहीं होता जिंदगी के अंदर. मैंने देखा कि अगर हम बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे, then also we are not able to do well. So people who are able to do well have persistence, have this stickiness to the target, which is called a grit. और यह जिद बोलेंगे, उसको जिद है मुझे तो करना है, नहीं तो वो छोड़ देंगे. तो क्या एक दिन थक जाएंगे फिर छोड़ देंगे. या भाई ये तो यू मस्ट हैव सीन इवन इन डांस क्लास, कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे पहले दिन आएंगे, ये तो मैं तो थक गया 6 घंटे में, मैं तो जा रहा हूँ. And then if you don't have stickiness to your goal, then the success doesn't happen. I think what my analysis is that Kanan has that grit. Yeah. That is why she is successful. And second thing is that she takes things as learning experience, which is very important. क्योंकि हर चीज के साथ अगर हम उसको जिंदगी को जोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी. बट इनसे लर्निंग एक्सपीरियंस है, जीतेंगे तो बहुत अच्छा है, हारेंगे तो भी कुछ सीखेंगे. And then then the stress is not there, then you are able to perform better also in the exams. I think you have very, very beautifully, discussed everything. Karan, I also want to know, do we have your parents around, or, do you, right now, can we have them in the frame? Yeah, my mom is probably can I call her? Definitely. Yeah. Okay, tell you? Just wait. Yes. Yeah, no problems. And so by the time Kanan and her mother joins us in this interview, I would again want you to know that please look at every interview as a source of inspiration, as an idea that agla interview is channel pe mera hoga. That should be your thought in your mind. So once you look at every interview with a perspective, you start, getting motivated by them. And also look at these stories. If you find any of those stories similar to yours, seek an inspiration from that story. I think, that is very, very important. And I always want you to know that the key in life is to seek positivity, seek inspiration from wherever you can. And that is the key. And I think, her mother is about to join us. And see your parents in this scenario, and that will motivate you, that there will be a day when we will call your parents also into this interview. And I think you will feel that should be your driving force, and that should be your motivating force. Sir, I'm bringing my mom. हाँ आजा. Hello, नमस्ते sir. आंटी, कैसा लग रहा है? आप बच्चा आपका इतना अच्छा रैंक लेके आई है और मेहनत की है बहुत उसने. अच्छा लग रहा है, मैंने तो बहुत मेहनत करवाई है. मैं ना अपने आप को स्क्रीन से हटा रहा हूँ, और आपकी तरफ से एक बढ़िया सा मैसेज चाहिए मुझे गुजराती के अंदर या जैसे भी आप देना चाहें. बढ़िया.
नहीं, पढ़ाई तो बहुत करो बस, और लड़कियां आगे बढ़नी चाहिए बस। मेरा तो वही है। और मैंने जो उसको जब से जन्म दिया तभी मैंने सोचा था कि उसको तो हम डॉक्टर ही बनाएंगे, और अच्छी बेस्ट डॉक्टर बनाएंगे। और लड़की है तो उसको आगे मतलब पैरों के ऊपर खड़ा होना ही चाहिए। दैट इज माय मोटो। मतलब मैं जैसे मैं गुजराती में बोल रही हूँ, नहीं छोकरी चाहता है जब कमाऊ જોઈએ મારો એક એમ છે। હું બી અર્નિંગ કરું છું, એને બી અર્ન કરતા શીખવું જોઈએ, એ જમાવો મોટો છે। वेरी वेरी ब्यूटीफुल थॉट दैट यू हैव शेयर्ड विद अस कि भाई हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ आज भी कई जगह पे वो लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये लड़कियां बहुत ज्यादा कैपेबल रखती हैं और दे कैन अचीव एवरीथिंग दैट दे वांट टू, एंड कनन इज द एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस कि वो क्या अचीव कर सकती है। उन्होंने उसने मेहनत की, हार्ड वर्क कंटिन्यू रखा और एम्स की रैंक तक पहुंच के दिखाया। वो यूजी के समय एम्स नहीं दिया था, लेकिन आज उसने उसका बदला लिया और रैंक ला के दिखाई। That is the idea. नहीं, हमने भी कभी बेटे और बेटी में ऐसा सोचा ही नहीं है। मेरी भी 2 ही बेटियां हैं, मैं बेटे के लिए तो कभी सोचा ही नहीं था। और आई प्रेफर ओनली गर्ल्स। लड़कियां वैसे भी आई थिंक दे आर मोर इमोशनल एंड मोर यू नो मोर लविंग विद द पेरेंट्स आई थिंक। थोड़ा अच्छा रखते हैं बच्चे। बहुत ही अच्छा लगा आंटी, आपके उनके भी हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस आपको भी। बच्चे ने बहुत ही अच्छा रैंक निकाला। थैंक यू। अभी पापा तो नहीं होंगे, अभी बाहर गए होंगे पापा ना? नहीं, हाँ चलिए कोई बात नहीं। हमने खबर है पापा रेडियोलॉजिस्ट है। या हर फादर इज रेडियोलॉजिस्ट। बहुत ही अच्छी बात। आई थिंक बच्चे को भी उसी कारण से रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट भी आ गया हो। हाँ बेटा, आई थिंक इसीलिए रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट भी आ गया होगा तेरा भी, है ना? या अलग थोड़ा रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मतलब वही अभी वही सो वो हाँ ओके। सिस्टर? सॉरी, योर सिस्टर? नहीं, माय सिस्टर इज को पढ़ रही है, उसको बुला ले बुला ले, मिल लेते हैं इसी बात में। ओ इतना मौका। she is in dance only right now, she is in third final right now and वो भी अभी dance कर रही है। Say कि give grant test regularly every monthly, give SWTs. SWTs are a good way to revise your each subject and stay focused, stay motivated, and if you and decide if you and please try to give AIMS media AIMS exam. They are a very good exams to target.